Hi everyone, very good afternoon and welcome back to CGB Mentors. So today we'll be doing the news analysis for the news items that are there on today's newspaper, that is 23rd of June, right? So we'll start with the first article that we have in hand, and it calls for base year revision for GDP, CPI and IIP. So right now, what is the position is for GDP, we are using the base year as 2011-12. This is the same base year for IIP as well, and for CPI we use 2012. CPI के लिए हम कौन सा base year use करते हैं 2012. Now it is very important that base year should be kept on revising. ठीक है, base year को revise करते रहना चाहिए. ऐसा क्यों? See, if I tell you that I am comparing rupee 10 with a base of 100 versus if I am comparing rupee 10 with a base of 1000, don't you think it will make a difference? What is there in the denominator will always make a difference, right? तो अगर मैं प्राइस राइज कंपेयर करना चाहती हूँ कि ठीक है 2024 में क्या प्राइस राइज रहा इन कंपैरिजन to let's say 2018, this is going to give me a better comparison. ये मुझे ज्यादा just a second. Yes. So ये मुझे ज्यादा अच्छा कंपैरिजन देगा, right? Versus if I will compare 2024 with 2012, this is not going to give me a better comparison, right? Because the base year is too old. Over here, the base year is nearer. So that is why India is now trying or is set to change the base year. तो हम बेस ईयर क्या चेंज कर रहे हैं फॉर जीडीपी एंड आईआईपी, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम इसको चेंज कर रहे हैं 2022-23, राइट? दैट इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23. एंड फॉर सीपीआई वी आर प्लानिंग टू चेंज दिस टू 2024. सो दैट देखो जितना ज्यादा बेस ईयर आपका पास में रहेगा आपके कंपैरिजन के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा. आप अच्छे से बता पाएंगे कि व्हाट हैज बीन द प्राइस राइज, क्या इंक्रीज हुआ है. अदरवाइज अगर आपका बेस ईयर जो चीज 2012 में 100 रुपए की थी, आज वो अगर मान लीजिए 500 रुपीज की है, यू विल से दैट ओ टू मच इन्फ्लेशन, right? But this is not correct. 2012 was 12 years ago. 12 साल पहले और आज के prices में obviously there is going to be a difference, right? Now, in this article, they have also told us कि हम क्या use करेंगे, basket में क्या use करेंगे. Although they haven't commented anything कि CPI की basket में क्या change होगा, right? And other peculiar changes have not been told over here. तो जब बताया जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट इट, राइट? अभी हमें बस ये ध्यान रखना है दैट इंडिया इज सेट टू चेंज द बेस ईयर, राइट? एंड सीपीआई बास्केट इज गोइंग टू एक्सपैंड, क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है वो भी तो बढ़ गया है ना, तो बास्केट भी बढ़ेगी. दिस वाज फर्स्ट आर्टिकल. Moving on to the next article, which is obviously in news, Strait of Hormuz. ठीक है, आपका इजराइल ईरान का जो वॉर चल रहा है, we'll be talking about that. But for us in this article, why I have included this, because there are two factors. Number one, obviously oil imports, sorry, right? So for this article gives us a data कि 26% of the world's oil trade passes through the Strait of Hormuz. 26% of world's oil trade every day means it passes through the Strait of Hormuz. Now over here you have to also understand one thing. सिर्फ oil import ही नहीं, there is something else that we also import from West Asia, that is fertilizers. ठीक है, we import urea, DAP, पोटैश फ्रॉम वेस्ट एशिया. ठीक है, और ये दो आइटम्स हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है. In terms of if you talk about fertilizers, it is very important for our agriculture,
जो अभी खरीफ की फसल जो बोई जाएगी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और अगर ये ब्लॉक होता है then we our import bill is definitely going to rise because what we'll experience is imported inflation. Imported inflation क्या concept होता है? When we are buying something from outside of our country and there is inflation in that particular area, we are also importing it. So that's what that has been given over here in this particular article. West Asia accounts for 16% of global फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट। वेस्ट एशिया से दुनिया भर का 16% फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होता है, जिसके मेजर रिसिपिएंट है आपके इंडिया, ब्राजील, चाइना, राइट। तो अगर देखा जाए ये जो वॉर होने जा रहा है या फिर एकदम स्टार्ट हो गया है, इससे बहुत सारी कंट्रीज इम्पैक्टेड होंगी एंड फॉर अस एज अ नेशन दीज आर द 2 point irritant which is important for us, ठीक है। So this was there. Now moving forward to our next article that talks about missing urgency, right? So यहाँ पे एक मिड ईयर यूएन का क्लाइमेट चेंज रिलेटेड समिट हो रहा है, दैट इज बॉन समिट, राइट। ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट कि अब जो है क्लाइमेट टॉक्स के ऊपर से बात जो है हट चुकी है, राइट। देयर इज नॉट मच अटेंशन इफ यू सी on the front of climate. Why? Because see, US has withdrawn from your Paris climate agreement, ठीक है। यूएस ने तो कहा कि भाई हम तो ये सब करेंगे ही नहीं, आप देख लो आप आपस में क्या करने वाले हो। दूसरी चीज, जितनी ये ट्रेड टेंशंस बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, अपार्ट फ्रॉम दिस strategy of war, launching a war, right? Diplomacy has, what you can say, finished and the place of diplomacy has been taken by war. So इन सब की वजह से अगर आप देखोगे ना, क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा बात ही नहीं हो रही है and this is very problematic. Now through this summit countries are trying कि 1.3 trillion dollars they have to start generating for climate finance from 2035 onwards, ठीक है। क्योंकि अभी जो 300 बिलियन डॉलर्स मिल रहा है दैट इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट, ऐसा कहा गया है कि ये तो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। हमें क्या करना है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स अरेंज करना है बाय 2035 एवरी ईयर, so that we can support the climate adaptation and mitigation. जब तक पैसा नहीं होगा तो कैसे क्लाइमेट के लिए अडेप्ट या मिटिगेट करेंगे। बट ओवर हियर दे हैव टॉक्ड अबाउट दीज 3 प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर right now, right? And going forward also, like countries like India, we have said कि आप इस पे फोकस कीजिए कि हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, the responsibilities are distributed. Because historically the world economies, they have been what you can say, we can say that they have produced this climate change, they have been the major culprit of this climate change, greenhouse gas emissions, and they should be highly responsible for this. So this के लिए एक term है CBDR, that is common, but we have differentiated responsibilities as per our respective capabilities, so called as CBDR, common but differentiated responsibilities as per our respective capabilities. So this is the principle which the India is supporting कि आप इस बात को मानिए, हमारे पास में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है और प्लस हमने इतना पॉल्यूशन भी नहीं किया है, so you are responsible for it. Moving forward to our next article, that is there, geopolitics tariff strip up प्राइवेट इक्विटी एग्जिट। अब यहाँ पे ये आर्टिकल तो थोड़ा सा बहुत ही कोर फाइनेंस का आर्टिकल है, तो हमें तो बस ये पढ़ना है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होती हैं। सी, these firms, they invest in the startups, companies, etc. Right? Mostly these are unlisted entities जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अनलिस्टेड एंटिटीज के लोग शेयर्स परचेज कर लेते हैं, मेजॉरिटी शेयर्स, right? And then they keep those shares for 7 to 8 years. पहले ये टाइम 4 से 5 साल था, अब कम से कम 7 से 8 साल रखते हैं, so that the share prices will grow. And once the share prices have grown, मतलब मान लीजिए 125 रुपए में कोई शेयर खरीदा था, आज वो शेयर मान लीजिए कितने का है, 5000 का। So कितना एकदम इमेंस गेन हो गया ना, अपनी कैपिटल बढ़ा ली इन्होंने, कैसे?
7 से 8 साल उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी को देख के चलाकर, राइट। सो व्हाट दे आर टेलिंग इन दिस आर्टिकल इज कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की एग्जिट जो है ना वो स्लो हो गई है, राइट। वाई? बिकॉज राइट नाउ अच्छी डील्स नहीं मिल रही हैं। पहले 4 से 5 साल तक रखते थे, अब 7 से 8 साल रखते हैं, ताकि सो दैट जब नॉर्मल टाइम हो, जब उनके शेयर्स को कोई खरीदने वाला हो, जब उनके शेयर्स का अच्छा वैल्यूएशन लगे, तभी ये लोग बेचते हैं, उससे पहले ये नहीं बेचते हैं, राइट। सो दैट इज इट। इसमें आपको सिर्फ ये प्राइवेट इक्विटी एग्जिट्स के बारे में समझना था, बाकी तो पूरा आर्टिकल हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज रेलिवेंट फॉर अस। Moving forward and talking about India's export-import faces risk amid US intervention in the Israel-Iran war. ठीक है. Again over here they are talking about that how important Iran is for us. हमारे लिए कितना जरूरी है और वेस्ट एशिया कितना जरूरी है. तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको जो है टर्म्स दी, कुछ डेटा दिया हुआ है. जैसे कि इंडिया का जो ट्रेड है ईरान के साथ में वो $1.7 बिलियन है, राइट. इतना नहीं था, काफी अच्छा ट्रेड था इंडिया ईरान के बीच में, लेकिन सैंक्शंस की वजह से $1.7 बिलियन है. बट दिस इज जस्ट अ ट्रेड विद ईरान, ठीक है. हमने इन्वेस्टमेंट किया है चाबहार पोर्ट पे. चाबहार पोर्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस. रीजन बीइंग दिस इज द सोर्स ऑफ आवर कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान, राइट. ईरान इज ऑल्सो अ वेरी मेजर पार्टनर फॉर अस ऑन INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, राइट. उसमें भी ईरान हमारा एक बहुत क्रूशियल पार्टनर है. और अगर आप अगर आप देखना चाहें तो ईरान को अगर आप हटा भी दें पिक्चर से, तो वेस्ट एशियन रीजन में इंडिया का एक्सपोर्ट $8.6 बिलियन है और इम्पोर्ट्स $33.1 बिलियन है, as per the information given in this article. So not just the Iran, West Asia as a whole is important for us. Right. And apart from that, see, not just the Strait of Hormuz, but Red Sea route may also be affected by the conflict. Red Sea route सऊदी के बीच में है, सऊदी कंट्रीज, वहां पे भी इम्पैक्ट आएगा. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इम्पैक्ट आएगा, राइट. एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑयल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं. दिस ऑल विल बी इम्पैक्टेड, राइट. बट एक जो रिलीफ की बात यह है कि इंडिया अपने ऑयल का 35% रिक्वायरमेंट आजकल रशिया से ले रहा है, राइट. वाई? बिकॉज जब सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, तो इंडिया ने तो अपना ट्रेड बंद नहीं किया है. रशिया से वो डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर रहे हैं हम लोग, राइट, जो हमारे लिए चीप भी है, एंड इट ऑल्सो डाइवर्सिफाइज आवर प्रोक्योरमेंट. सो दिस इज गुड फॉर अस ऑल्सो. सो दिस हैज बीन सजेस्टेड इन आर्टिकल कि आपको आपका जो प्रोक्योरमेंट है वो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, बिकॉज ट्रेड टेंशंस एंड द war kind of tensions which are right now ongoing will keep on coming in the future also. So we should be better prepared for such kind of disruptions. So this was all that we had to discuss in today's newspaper. Thank you so much for joining in, and I hope if you have understood something out of this lecture, please do not forget to like this video.